Good morning to all of you. This is Poonam here, your social science teacher from Vishwa School, Una. Dear students, I hope you all are fine. We are doing the chapter Major Physiographic Divisions of India. So today, first let's see the difference between the Western Ghats and the Eastern Ghats. The Western Ghats mark the western edges of Deccan Plateau and the Eastern Ghats mark the eastern edges of Deccan Plateau. Western Ghats are continuous and can be crossed through passes only and causes orographic rain. वेस्टर्न घाट्स जो है उनका लेवल हाई है, एलिवेशन हाई है, तो वो कंटिन्यूस है और उनको पासेस के थ्रू ही क्रॉस किया जा सकता है. एंड अबाउट द ईस्टर्न घाट्स, दे आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. सो जो मेन रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं ईस्टर्न घाट से, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं जाकर. सो द ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो discontinuous है. The Western Ghats are higher than Eastern Ghats. Average elevation है 900 to 1600 meters and Eastern Ghats lower than Western Ghats. Average elevation is 600 meters. The highest peaks include the Anaimuri 2695 meters and the Dodabetta 2637 meters. तो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी. एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इज महेंद्रगिरी 1501 meters. Shebroy Hills and the Jabri Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats. Now let's discuss about the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. So here you can see the Peninsular Plateau. It is divided into two parts, Central Highlands and the Deccan Plateau. Distinct features of the Peninsular Plateau is the black soil area. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. तो volcanic origin है तो rocks कौन सी हैं? Igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. तो time to time igneous rocks में denudation होने के कारण black soil formed हो गई है. Now let's discuss about another physical feature of India, that is the desert. The Indian desert lies toward the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. Regions receive very low rainfall below 150 millimeter per year and climate is arid and low vegetation. तो अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड्स है इंडियन डेजर्ट. ये बहुत बड़ा सैंडी प्लेन है जो सैंड ड्यून से कवर है और जो रीजन है उसमें बहुत कम रेनफॉल होता है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल ड्राई है और कम रेनफॉल होने के कारण जो वेजिटेशन है वो भी लो है. Luni is the only large river in this region. Burchan's crescent-shaped dunes cover larger areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. Now let's discuss about the western coast. Sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. तो वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच के जैसे है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में, जो कि एक नैरो प्लेन है. कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड साउदर्न स्ट्रेच. नॉर्दर्न पार्ट में इसका कोंकण, Mumbai to Goa, here you can see, and central stretch में the Kannada plain and in southern plain the Malabar coast, as you can see in this image also. Next we will discuss about the eastern coast. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. Northern part the Northern Sircar and southern part the Coromandel Sircar. So here you can see also large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. तो ये सारी की सारी रिवर्स मिलती हैं जाके बे ऑफ बंगाल में और यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं. लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. तो लेक चिल्का भी एक फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का. So students, what is an island? An island is a piece of land entirely surrounded by water. Island may occur in oceans, seas, lakes or rivers. Students, did you know a group of islands is called an archipelago? Our country has 2 island groups, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. So first let's discuss about Andaman and Nicobar Islands. Chain of islands located in the Bay of Bengal extended from north to south. तो ये बे ऑफ बंगाल में है, आइलैंड्स की एक चेन है, बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड. साइज में भी ये बड़े हैं और काफ़ी जगह ये स्कैटर्ड हैं. द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज,
First is the Andaman in the north and second is the Nicobar in the south. Next is Lakshadweep Island, lying close to the Malabar coast of Kerala, composed of small coral islands. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amentivi. In 1973 these were named as Lakshadweep. Lakshadweep Island Arabian Sea में है, Malabar coast केरला के नज़दीक और स्मॉल कॉरल आइलैंड्स हैं ये. पहले इसका नाम लैकेटिव, मिनिकॉय एंड एमेंटिवी था, बट इन 1973 it was changed into Lakshadweep. Lakshadweep covers small area of 32 square kilometers. Kavarati Island is the administrative headquarter of Lakshadweep. The island group has great diversity of flora and fauna. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. तो 32 किलोमीटर का इसका एरिया है. कावाराती आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पे पिटी आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी भी है. So students, this is all about this chapter, the physical features of India. Now revise this chapter. Thank you. Have a nice day.